Let's start discussing exercises related to grammar portion now. We are supposed to discuss cases कि कहाँ पे definite article दा लगता है और कहाँ पे indefinite article a और an लगते हैं, क्योंकि हमारी आगे की exercises इन्हीं से related हैं. So let's begin. जो हमारे पास indefinite articles हैं वो दो type के होते हैं, a और an, and then we have one definite article which is the. There are certain rules and cases to use these articles. It's very simple. हमने यही पढ़ा हुआ है बचपन से कि आ जो है हम consonants के साथ use करते हैं और an जो है हम vowels के साथ use करते हैं. And then if you are asked, you will simply name the alphabets. जैसे कि आप कह दोगे an हम use करते हैं A, E, I, O, U के साथ. But this is wrong. You are not supposed to use and with these letters. इनसे जो voices emit होती हैं उनके साथ हम vowel use करते हैं. So if I say कि A के साथ and use होगा, no. We'll use it with a. E के साथ नहीं होगा, A के साथ होगा. And then इसकी E sound produce होती है, इसकी O ही होती है और इसकी ऊ होती है. So हम क्या कहेंगे कि हम vowels कहाँ use करते हैं, किन voices के साथ use करते हैं, a, e, o, u. You will not say कि a, e, I, o, u के साथ करते हैं. अगर ये केस होता तो अगर हम यहाँ पे लिखें university, why are we not using and with university जबकि यहाँ पे u आ रहा है. Actual में हमारे पास u की sound नहीं produce हो रही बल्कि u की हो रही है. So we'll use a here. And then if I say MPhil, एन MPhil डिग्री होल्डर क्यों कहते हैं हम, M कौन सी साउंड पहले प्रोड्यूस हो रही है, A की, जो कि E से एमिट होती है, तो यहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे. एंड देन ऑनरेबल मैन, यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे आ आना चाहिए बिकॉज H यूज़ हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे वॉइस कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, ओ की, ऑनरेबल मैन. सो अगेन विल यूज़ एन हेयर. सो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए ई आई ओ यू के साथ हम वाउल्स यूज़ करेंगे, दैट नोशन इज़ रॉन्ग. हम एक्चुअल में उनकी जो वॉइसेस प्रोड्यूस करते हैं हम उनके साथ वाउल यूज़ करते हैं. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दीज 5 लेटर्स बाकी कॉन्सोनेंट्स के साथ विल यूज़ अ. And then let's come to the complex one, which is definite article the. There are certain rules to use this article. First is you will never use this article with proper nouns. Proper nouns कौन से होते हैं कि अगर नाम है, किसी लड़के का नाम है, let's say Ali, you won't say the Ali, it will be wrong. And then you won't use it with plurals unless and until कोई specific plurals या groups की बात हो रही है. जैसे कि if we say the French, then it's fine क्योंकि हम specific group की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सही होगा. And then you are not supposed to use the with country names unless and until there are states या फिर उनका plural नाम हो. जैसे कि अगर हम बात करें USA की, we use the like the United States of America, या फिर रिपब्लिक जिसमें आता है जैसे कि पाकिस्तान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. एंड देन मैंने प्लूरल्स की भी बात की थी, जैसे कि नीदरलैंड की बात करें तो इट्स ऑलवेज द नीदरलैंड्स बिकॉज प्लूरल है. एंड देन फिलिपाइंस, उसके साथ भी द यूज़ होगा. एंड देन यू विल ऑलवेज यूज़ द विद वाटर बॉडीज़, लाइक अगर आप ओशन के नाम लिखो, रिवर्स के नाम लिखो या फिर आप माउंटेन्स के नाम लिखो, तो जियोग्राफिकल अगर हम उस एस्पेक्ट में जाएं तो आप माउंटेन के नाम के साथ और रिवर्स और ओशंस के साथ हमेशा द यूज़ करोगे. जैसे कि द पैसिफिक ओशन, एंड देन द हिमालयाज, ठीक हो गया, या द माउंट एवरेस्ट. अब माउंटेन्स और वाटर बॉडीज़ के साथ स्पेसिफिकली ओशंस के साथ अब द यूज़ करोगे. एंड देन हम द क्यों यूज़ करते हैं, जो सबसे कॉमन रूल होता है, हम द किसी की इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो, द गर्ल स्टैंडिंग एट द डोर, इसलिए आप यहाँ पे द लगाओगे, द गर्ल स्टैंडिंग एट द डोर, कि आप एक स्पेसिफिक गर्ल की बात कर रहे हो, कोई भी आम गर्ल की बात नहीं कर रहे हो. तो द जो है वो हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ होता है. एंड देन अब द कहाँ नहीं लगाते हो, आप मील्स के साथ द नहीं लगाते हो, जैसे कि लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, इनके साथ अब द यूज़ नहीं करोगे. एंड देन आप यूनिक बॉडीज़ के साथ द यूज़ करते हो, जैसे कि वी से द सन, द मून, ये एक ही हैं, राइट? तो इनके साथ हमेशा द आएगा. एंड देन यू विल यूज़ द विद ऑर्डिनल नंबर्स एज वेल. ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. द थर्ड टाइम, द फर्स्ट टाइम, आप इनके साथ द यूज़ करोगे. एंड
Most important, you'll always use the with superlative degrees of adjectives. Comparative degree होती है, उसके साथ हम than use करते हैं, an वाला, and then superlative, जैसे कि this is the best place. अब बेस्ट जो है गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, राइट? इसके साथ अब हमेशा द यूज करोगे और ये हमें क्लू भी देता है कि जहाँ पे द आए वहां पे हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा. एंड देन हाउ डू यू प्रोनाउंस द? यू डोंट ऑलवेज से द, इट्स ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज दी. उसके क्या कंडीशंस होते हैं? जब द जो है वाउल से पहले आएगा, जैसे कि वी कैन से एप्पल. आप द एप्पल नहीं कहोगे, आप दी एप्पल कहोगे. आपने हमेशा सुना होगा कि हम हमेशा दी एंड बोलते हैं, द एंड नहीं बोलते हैं. इट्स बिकॉज वाउल आ रहा होता है, वाउल साउंड आ रही होती है, इससे पहले जब द लगता है तो आप हमेशा दी एंड बोलोगे. एंड जब कॉन्सोनेंट से पहले आएगा देन यू कैन प्रोनाउंस इट एज द. So let's move on to its exercise now. First one is fill in the article a, an or the where necessary. Choose X या cross where no article is used. First one is I like dash blue t-shirt over there better than dash red one. So specific t-shirt की बात हो रही है. I like the blue t-shirt over there जो कि वहाँ पे पड़ी हुई है, over there better than the red one. और specific red t-shirt की बात हो रही है, so we'll use the. Second is their car does 150 miles an hour. H के जो साउंड है यहाँ पे आ के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. Third is where's dash USB drive I lent you last week. So specific USB drive की बात हो रही है जो उसने किसी को दी थी. Fourth is do you still live in Bristol? You will not use any article with the name of country or city. Fifth is your mother working in dash old office building? In an old office building. Sixth is Afsha's father works as an electrician. Seventh is the tomatoes are ₹30 a kilo. आप a kilo जब बोलते हो तो it means ₹30 per kilo. Eighth is what do you usually have for breakfast? As I said, आप meals के साथ article नहीं लगाओगे. Ninth is Hashir has dash terrible headache. Hashir has a terrible headache. 10th is after this tour you have dash whole afternoon free to explore the city. You have the whole afternoon to explore the city. Let's move on to next exercise, which is fill in the blanks with the definite article the if needed. Put an X या cross if not needed. First is my grandmother likes flowers very much. अब plurals के साथ आप आर्टिकल द नहीं यूज करोगे अनलेस एंड अनटिल कोई खास किस्म के ग्रुप की बात हो रही है, प्लूरल्स की बात हो रही है. सो यू वोंट यूज एनी आर्टिकल ओवर हियर. सेकंड इज आई लव डैश फ्लावर्स इन योर गार्डन. नाउ स्पेसिफिक फ्लावर्स की बात हो रही है व्हिच आर इन योर गार्डन, सो यू विल यूज द ओवर हियर. Third is see you on Wednesday. Again, you won't use the with proper nouns. Fourth is Zuhaib goes to work by bus. No article. कोई specific bus नहीं. He goes to work by any bus. So we won't use the over here. Fifth is don't be late for school. No article. Sixth is listen Kashif is playing the trumpet. अब यहाँ पे the क्यों आएगा? यहाँ पे specific किया गया है कि कौन सा musical instrument चलाया जा रहा है, trumpet. तो उसके साथ अब the use करोगे. Seventh is we often see our cousins over Eid. It's proper noun, no article. She has never been to Natya Gali before. Name of place. Again, proper noun, no article. Ninth is what about going to Karachi in February? Again, name of month, proper noun, no article. So with this, we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा. Inshallah, we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is Maha, your English instructor, signing out.